Good evening, masters. Good evening, everybody. Let us sit in meditation. We will do Anapanasati breath in circles. सब बैठ जाते हैं मेडिटेशन में. अब आनापानासती मेडिटेशन करेंगे सांसों को गोले में लेते हुए. तो जो नए लोग जुड़े हैं उनके कुछ सवाल थे कि ये सांसें गोले में क्यों लेते हैं और इसका आनापानासती से क्या रिलेशन है, तो इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं. इस बात को भी सांसों से ही सुनेंगे. तो सांस को गोले में लेने लग जाइए. गोले का मतलब कोई ब्रेक नहीं. गोले में पूरा कंटिन्यूटी है, कोई ब्रेक नहीं. तो सांस अंदर आई और बाहर गई तो नॉर्मली जो गैप होता है उस गैप को मर्ज कर देना है. अंदर आती हुई सांस बाहर आती हुई सांस में बदल जाती है. ये एक विजुअलाइजेशन, दृश्य देखने की टेक्निक है जिसमें आप ब्रेक ना लें, बस अंदर आती हुई सांस को बाहर आती हुई सांस में बदल दें और फिर अंदर आती हुई सांस. तो बन गया गोला. ध्यान सांस पर रखें, गैप पर नहीं, और पूरी कंटिन्यूटी में रहे सांस. गैप महसूस ना हो क्योंकि मर्ज हो रही है अंदर आती हुई सांस बाहर जाती हुई सांस से. So masters, there are some new people who've joined, and there was a question about what is this circular breath and how is it connected to Anapanasati breath. So first let's discuss what is circular breath. As we are discussing this, let us come in circular breath, which is you start breathing in and out in a circle, meaning a circle has continuity, there is no break in between. So the incoming breath merges with the outgoing breath in your visualization, and outgoing breath merges with the incoming breath in your visualization. So you just visualize perfect blending so that there is no break. You're breathing in and out in a circle. In followed by out, followed by in, but since there's a merging between in and out, you do not focus on the gap. There is no gap. It's just a circle, circle, and again a circle. So this is the circular part of this breath. ये ब्रेथ अब आनापानासती क्यों कहा जाता है इसको? आना का मतलब अंदर आना, पाना, आना पाना में पाना
यानी कि जाना बाहर जाना, और आना पाना सती, सती यानी कि जैसे हो रहा है बीइंगनेस, जैसे आती है जाती है चलती रहती है, इस तरह से। बहुत ही सरल है ये, मगर अगर दिमाग में है, अगर इमोशंस में है, अगर ईगो में है, यानी कि विचारों में, इमोशंस में, अहम में, इन तीनों में है, तो हमारी सांसें गोलों में नहीं चल सकती, एक रेगुलर रिदम में भी नहीं चल सकती। जैसे जैसे विचार आएंगे, सांस हल्की भारी, छोटी बड़ी चेंज होती जाएगी विचारों के द्वारा। थोड़ा इमोशन बढ़ा, और डिपेंड करेगा कैसा इमोशन। अगर तेजी वाला इमोशन है तो एकदम सांस भर जाएगी। अगर सैडनेस का इमोशन है तो थोड़ी एकदम शैलो हो जाएगी और सांस ही नहीं ले रहे। फिर कोई थॉट आएगा, फिर सांस बदलेगी, और ये बदलती बदलती रहती है हर क्षण, जैसे जैसे हम सोचते जाते हैं और इसकी अवेयरनेस नहीं रहती। मगर सांसें और इमोशंस गहराई से जुड़े हुए हैं। सोच में भी थोड़े इमोशंस जुड़े होते हैं। हम वो ही सोचते हैं जिसमें कुछ हमारा इमोशनल अटैचमेंट या रेजिस्टेंस होती है। या तो किसी चीज़ को बहुत लाइक करते हैं या बहुत डिसलाइक करते हैं, लव और हेट, इस तरह के विचार घूमते रहते हैं। एक्सपेक्टेशंस, जजमेंट्स घूमते रहते हैं, और अलग अलग विचार, इमोशन अलग 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 रिदम बनाते रहते हैं। तो एक रेगुलर रिदम नहीं बनती कि सेम टाइम पे इन हो रहा है, सेम टाइम पर आउट, और उसके ऊपर एक गोला भी बन रहा है जो कि नॉर्मल आनापाना से भी ज़्यादा है। एकदम गोला बने जा रहा है, सेम टाइम पे इन, सेम टाइम पे आउट। जैसे ही रेगुलर सांस लेने लगेंगे, इन एंड आउट एंड इन एंड आउट, सारा ध्यान वहाँ लगा रहेगा, तो हम कट कर देते हैं हमारे माइंड को। क्योंकि माइंड बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है सांसों से, सांसों के पैटर्न से। माइंड है इरेगुलर, अलग अलग तरह के विचार, भावनाएं, कभी छोटी कभी मोटी भावना, सांसें भी कभी छोटी कभी बड़ी, कभी। तो वो जो इरेगुलर पैटर्न है वो बिल्कुल जुड़ा होगा माइंड से, अगर उस माइंड को उस तरह से चलना है। उस इरेगुलर पैटर्न को हमने एकदम रेगुलर बना दिया तो वो विचार, भावनाएं नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें रहने के लिए अपना अलग पैटर्न चाहिए। आपने रेगुलर पैटर्न बना दिया तो विचार धीमे होते जाएंगे। तो ये समझना है, थोड़ा सा ये गहरा डिस्कशन है, तो सांसों में बने रहिए जब ये सुन भी रहे हैं कि रेगुलर रिदम में, गोले में सांस लेंगे तो सोच नहीं चल सकती ज़्यादा। वो इसीलिए चलेगी क्योंकि आप पूरा फोकस गोले पे नहीं डाल पा रहे। आप सोच रहे हो गोले में सांस लेनी है, मगर ले नहीं रहे हो।
जैसे ही लेने लगोगे गोले में सांस रेगुलर रिदम में, तो धीरे धीरे विचार कट होते जाएंगे, इमोशन कट होते जाएंगे, मन शांत होते जाएगा। एक बहुत गहरे विश्वास को लाना है कि इन सांसों में डूबना है। तो ये इसका कनेक्शन हुआ आनापानसति से और माइंड को की कॉर्ड को कट करने से। तो ये इसलिए हम ऐसी सांसें लेते हैं। इसका मेंशन भगवत गीता में भी है, कृष्ण क्रिया के नाम से गोलों में सांस। तो ये तब से चली आ रही है। और आनापानसति बुद्ध के टाइम से बहुत सेम है, खाली गैप पर फोकस नहीं करना है, गोले को देखना है, ये खाली फर्क है। तो अब गोलों में सांस लेते जाइए, विचार कम होते जाएंगे। So we discussed the circular part. Now what's the anapanasati? Ana means coming, pana means going, sati is beingness. So it's being with coming and going. It's very simple, as Buddha used to love this. It's the quickest way to come into the present moment, just in breath and out breath. To understand deeply why focusing on in and out in a regular pattern, that's number one. At the same time there should be in, at the same time there should be out, in a very regular pattern, not irregular. Irregular would be I breathe in and then I'm breathing out much longer, and then suddenly I breathe in medium, and then I breathe out very shallow, and then suddenly I breathe in very, very deep, and now I breathe out very deep. Again, I breathe in very shallow, breathe out deep. Like any kind of combination is irregular. There's no regular pattern. Irregular pattern of breathing is exactly correlated with thinking, emoting, being in the ego. The mind requires irregular pattern of breathing. It's like head and tail. You cannot take the heads out of tail in a coin. If there is mind working, irregular pattern of thinking has to be there. When the mind is in that noisy mode, emoting, thinking too much, ego thoughts are coming, you cannot stop your mind. And when you are in that, there is the irregular breathing happening. You're not seeing it, but it is happening. So the medicine of that is that you switch from irregular pattern to regular pattern. You breathe in and out in the same rhythm. Same rhythm. The same rhythm continues. You are cutting the cord from the mind, which for mind likes to wander. Wandering produces an irregular breathing. But if you make regular breathing, the opposite happens. The mind cannot wander. That's why Buddha loved it. Simple in and out.
Now, when you make it a circle, drop the focus from the gap. There is no gap. In becomes out, out becomes in. That even further cuts the mind, because it is the gap in which sometimes the mind will get again a chance. So the gap is very interesting. We'll discuss this. But keep breathing as I'm explaining this in a regular circle. Don't have too many questions, which you can ask later in the chat or later. Just whatever you understand, surrender to the circular breathing. Keep surrendering to the circular, regular rhythm, not irregular. It's not one circle is small, next circle is big. It's not the in is small, out is much bigger, then out is small, in is much bigger. Those are irregular patterns. Make a regular pattern. Same in and same out. Generally, in is energizing, out is relaxing. Energizing, relaxing, energizing, relaxing. Pattern continues, no gap, circle after circle. Continue like that. If you keep doing that, you are cutting the cord with the mind. Initially, you don't feel it, but within 5-10 minutes, it becomes obvious that the mind is getting silent. So that is what is happening. Buddha used to love this, gets you in the present moment. It's also mentioned as Krishna Kriya. That's what it comes even from Gita. The circular part comes from there. And so this has very ancient roots, this type of Anapanasati breath. And to keep breathing in this way, regular circles, in followed by out, followed by in. Keep breathing, सांस लेते रहें circles में, regular pattern में. Have complete trust that the body knows how to do it. If your spine is straight, you are sitting comfortably and have complete trust in the body. Body knows how to do this breath. You can just witness the process. Let the body do it. पूरा विश्वास रखें, पूरा ट्रस्ट रखें कि शरीर को ये सांस लेना आता है. शरीर में आते जाएं, अपने आप को साक्षी भाव में ले आएं. बस देख रहे हैं शरीर कर रहा है. सांस अंदर और बाहर एक रेगुलर पैटर्न में, एक सर्कल में.
Now we will discuss focus, how to pay attention. So this is almost like a physical thing. You have to train the mind's eye to simply surrender to the breath. It's a little energy of concentration. As you know, meditation is done in two methods: concentration and awareness. Concentration is a bit of a focus. Awareness is just awareness of what's occurring. So with Dhyanapanassati, just very slight concentration has to be on the breath and then stay in awareness. Awareness of present moment, of sounds, of your body weight, whatever. Of the present moment, however. Just concentration on the breath, focus on the breath, surrender to the breath. Breath is all there is. तो एक और चीज समझनी है, जब ये सांस लेते हैं तो हल्का सा फोकस, कंसंट्रेशन एनर्जी सांस के ऊपर है, सांस पर ध्यान दे रहे हैं। ध्यान भी दो तरह के होते हैं, कंसंट्रेशन वाला और अवेयरनेस वाला। कंसंट्रेशन में थोड़ा फोकस किया जाता है, तो आप फोकस कर रहे हैं सांसों में, आप सांसों से एक हो रहे हैं, सांसों में ही जाते जा रहे हैं, वहीं पे सारा ध्यान है। तो ये कंसंट्रेशन हुआ। अवेयरनेस भी करते हैं ध्यान में। अवेयरनेस यानी पूरी अवेयरनेस है, बॉडी कैसे बैठी है, क्या आवाज़ें आ रही हैं, पूरे प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस। उसमें कंसंट्रेशन नहीं होता, मगर हम दोनों कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं सांसों पे। सांसें बनते जा रही हैं, सांसों में पूरा ध्यान है और अवेयरनेस भी है, मगर मेन है कि सांसों में जाए जा रही हैं। पूरा ध्यान देते जाइए, सांसों के गोले छोटे होते जाएंगे, एनर्जी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, हल्की हल्की ग्रोथ होती जाएगी। सर्कल्स बना रहे हैं, बॉडी बना रही है, शरीर बना रहा है। जैसे जैसे सर्कल छोटे होते जाएंगे, आप और रिलैक्स होते जा रहे हो और एनर्जी बनते जा रहे हो। As you completely surrender to this focus on the circular breath, you become the breath. The body begins to breathe. You are just witnessing. The circles start becoming smaller with the surrender. The energy starts rising as the breath is
becoming into smaller circles. As you become the body, every now and then there may be a sensation of merging in and out breath, or suddenly a body takes energy in. It feels like energy of joy or freedom. It happens every now and then as you surrender to the circles. जैसे आप सरेंडर करते जाएंगे सर्कल्स में, सांस बनते जाएंगे, सर्कल्स छोटे होते जाएंगे. जैसे जैसे ये होता जाएगा आप एनर्जी बनते जा रही हैं. और कभी कभी मर्जिंग होगी इन और आउट ब्रेथ की, कभी कभी और एक एनर्जी का अनुभव होगा, आनंद जैसी एनर्जी, जैसे बॉडी एकदम फ्री हो जाती है या खुश हो जाती है, ऐसी गहराई से एनर्जी महसूस हो सकती है. आप सांसों में हैं. So this sensation of bliss or joy you may feel in between is when you are completely above the mind for a moment. There's absolutely no thought, emotion that gets you in that emptiness, and you feel that bliss. That is the gap. The true gap is the gap of being in the no mind. When you have for a second or two or more risen above the mind, you become pure energy. In that moment, the breathing may stop. So the gap comes from this emptiness, bliss, this feeling of joy, when you are so surrendered to breath that you rise above the mind completely. No mind, only emptiness, bliss, sudden sensation in the body, bliss energy. That is the gap. So gap is of the mind. There's no mind. That's the true gap. As that gap will increase in your life, that's samadhi. Samadhi is staying in that emptiness, bliss, where breath is completely become still. So now you understand the true meaning of gap. Keep breathing in circles, maybe small circles, completely surrendered, relaxed. जैसे जैसे सांसें छोटी होती जा रही हैं, पूरी सरेंडर में हैं. बीच बीच में
हो सकता है ऐसा क्षण आए कि एक आनंद, एक खालीपन, एक आजादी का अनुभव होगा अचानक शरीर में, जब आती और जाती हुई सांसें एकदम मर्ज हो जाती हैं और आप एक क्षण के लिए अपने मन के ऊपर चले जाते हो, जहाँ कुछ भी मन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं। उस शून्यता में एक आनंद महसूस हो सकता है। बीच बीच में कभी कभी, कभी 1 सेकंड, कभी 3 सेकंड, वो जो आनंद, शून्यता की फीलिंग है, बीच बीच में आती है, उसको हम गैप कहते हैं। गैप है कि माइंड से नो माइंड में आ गए सडनली, और एकदम आनंद फैल गया शरीर में। ये गैप छोटा छोटा आता है, फिर बढ़ने लगता है। ये गैप पूरा रहे तो समाधि में चले जाते हैं, जहाँ कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं। तो गैप यानी माइंड से नो माइंड, मन से ऊपर शून्यता। सांसों को गोले में लेते रहें, फोकस रखें, गोले छोटे होते जाएंगे, सांसें मिलने लगेंगी अंदर और बाहर वाली, और हो सकता है गैप आए एकदम खुशी का, आनंद का, नहीं भी आए तो भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। सांसों में ही रही, एनर्जी में रही, रेगुलर गोले, सर्कुलर ब्रेथ, keep staying in the breath, in circles, energy. Now feel some vibrations in these circles. Stay in the circles even though sound may enter. अब आवाज भी सुनेंगे म्यूजिक की, तो सांसों में ही रहिए। ये भी एक टेक्निक है
कि सांसों में ही सरेंडर रहना और वहाँ से सुनना। Stay in your breathing. You may feel yourself as energy body, some emptiness, bliss, or just normal breathing and very relaxed mental state. So we will just revisit a little bit the theme of the session in the morning. हम थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी सुबह के जो सेशन हुआ उसके बारे में, उस थीम पे थोड़ी सी विजडम लेंगे. So in these morning sessions, there's a lot of work done on the lower chakras, also the higher chakras, but the mind is more in the lower chakras, is actually all of the mind is around the first three chakras. That mind doesn't allow you to access the higher chakras. This is the wisdom of the goddesses, which is very true. So this mind, the brain stem in the root, the middle brain in the second chakra, the upper brain thinking about your conscious thinking brain more in the third chakra. And in the morning session, they were doing a lot of work on the root, going into the second chakra. A lot of cleaning was being done. In these meditations, skillful means are used with your visualization techniques. If you can visualize the portals like the lotus flower, swastika, and many connections like these, it enables you to feel the energies through these portals. So today, in general, you were made to feel these portals, and many divine beings came today. So you had Lakshmi Ma, Anasuya Ma, and Amma from South India, Ganpati Ji, Shri Krishna,
गायत्री माँ, हनुमान जी, दुर्गा माँ, even आनंदमयी माँ, निर्मला देवी, Machindranath ji, all of them, so many divine beings were working in different areas of your body and cleaning the dirt, cleaning the karma. And then once all of that was done, the body with its expansion increased in its size, became the whole universe in which I'll just say this in Hindi and come back. तो आज के सेशन में जो काम हुआ, जो चक्र होते हैं, पहले 3 में हमेशा ज़्यादा या पूरा ही माइंड होता है पहले 3 के अराउंड, जो लक्ष्मी जी भी कहती हैं। ब्रेन का स्टेम की एनर्जीज रूट चक्रा में होती हैं, मिडल ब्रेन की एनर्जीज सेकंड चक्रा में, इमोशंस ऑल दैट, और जो आपका अपर ब्रेन है उसकी एनर्जी थर्ड चक्रा में। और ये माइंड को ही तो मेल्ट करना है, सारे कर्म भावनाओं में, इम्प्रिंट्स में हैं। तो आज पहले 2 चक्रों पे काम हो रहा था, रूट में और सेकंड में जहाँ पर लोटस था। और आज कई डिवाइन बीइंग्स आए थे, लक्ष्मी माँ, अनसुईया, एकम माँ साउथ इंडिया से, गणपति जी, कृष्णा, श्री कृष्णा, गायत्री माँ, दुर्गा माँ, हनुमान जी, मच्छिंद्रनाथ जी, आनंदमयी माँ, निर्मला देवी, ऐसे कई डिवाइन बीइंग्स आज कई चक्रों पर काम कर रहे थे हीलिंग के लिए। चक्रों को अलाइन करना, डर्ट निकालना, और उनके साथ कई थाउजेंड्स ऑफ मास्टर्स भी जुड़ते हैं। तो ये काम हो रहा था, और जैसे जैसे ये हीलिंग हुई, हमारी बॉडी एक्सपैंड होने लगी और धरती के बराबर और फिर पूरा यूनिवर्स के बराबर, धरती जिसमें एक छोटी सी बिंदी बन गई, इतनी बड़ी बॉडी हो गई। और वो एक्सपेंशन के बाद फिर धीरे धीरे वापस बॉडी में आ गए। तो इसका ज्ञान आज थोड़ा समझेंगे कि ये बॉडी एक्सपेंशन का क्या मतलब है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ज्ञान आज जो हुआ बहुत ही गहरा और डीप प्रोसेस था, जिसमें सब कुछ है। अगर इसकी बातें करेंगे तो 4 दिन भी लग सकते हैं। थोड़ा सा खाली गाइडेंस देंगे कि ये बॉडी एक्सपेंशन का क्या मतलब है, हीलिंग का क्या मतलब है। So let us discuss what is meant by this body expansion that we felt when we become the whole universe. So masters, when you think deeply, this idea of size, that I'm small and something is big, that exists when you are not energy, when you are
identified with matter. When you are just energy, when you're becoming more and more light, the goal of these sessions is hopefully someday we are going towards becoming rainbow body, rainbow light. And light has very different rules. In even Einstein's theories that the speed of light remains constant, time and space change. So when you're becoming more and more light, you will find that these relations, what is small, what is big, they start breaking down. And if you become completely light, you will find there are universes within you, because infinity goes both ways. Externally, things are infinite. Internally, things are infinite too. Our body, the atoms and the molecules, within them, there are infinities. Think about this carefully. There is no end to smallness also. It's not smallness ends at some point. There are universes within universes, and we get this sense that we are a part of a universe. We're a small body, but within our body also there are universes. This can be felt most intimately, most vividly, when you start becoming more like energy. So as you start feeling yourself like more energy, this is not false that you are as big as the universe, because within you are universes. And that wisdom is realized by some masters who actually become rainbow body. If you look in Tibetan literature, you will find in Vajrayana Buddhism the concept of rainbow body. When you become light, the body becomes more and more light. This sensation that there are universes within you will become more and more clear. You'll actually start feeling it. So this is what infinity means. It goes in both directions. There is infinity beyond you, there is infinity within you. And masters are making, as Mahavatar Babaji is making you feel this, that this is what is coming. As you will become more an energy body, you will start discovering universes within. So then you lose this sense of I am small in this universe, because there are universes within you. And in one of the channelings it was shared that this whole universe that we are a part of could be a very small part of the body of another being in another universe. It's possible, because size is just relative. In that universe in which our universe is part of somebody's body,
that person sees themselves as also a small part of another big universe. Do you see this? It is all relative to the consciousness. So there are universes within universes, within universes, and by feeling yourself so expanded, it helps you become more the energy body. You become the whole energy of the universes within. And it helps dissolve your attachment to thingness, to matter as you know. So they took us in this deep place of becoming as big as the universe. This is also there in meditation 3 in Thousand Seeds of Joy book. There is a meditation 3, blessing the universes within. This was also channeled by Lakshmi ji in 2000, before 2018, where you are blessing the universes within you. And yet, enlightenment is just dissolving into that nothingness. Because the biggest infinities are when you become completely empty. Nothing remains, and that nothing holds everything. So you have to become nothing, beginning with the mind, with the breathing. Let the grip of mind go, all the beliefs, thoughts, emotions, ego. As that grip keeps reducing, our limited way of seeing reality changes. We become energy. As we become more energy, we start finding infinity within us. Those are the universes within us. But the mind patterns are so deep in the unconscious that we're getting incredible help with the divine beings who came today to clean our chakras, mostly the first two chakras. If those are completely cleaned of impressions, it'll help you completely go beyond the mind, the karma, and become this energy body. So this would be like the summary in the big picture sense of what is going on. तो आज जो ये थीम हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं खाली कि इसका क्या मतलब है कि हम पूरा यूनिवर्स बन गए, जो पहले भी हुआ है। तो इसका एक मतलब है साइंस से भी, फिजिक्स में भी, जो लाइट की जो स्पीड है वो ही कांस्टेंट रहती है, टाइम और स्पेस चेंज हो जाते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी में लाइट की स्पीड पे आप चलने लगेंगे तो टाइम ठहर जाता है और स्पेस भी बदलने लगती है, उसका साइज, यानी कि स्पेस कांस्टेंट नहीं है। अगर टाइम और स्पेस बदल सकते हैं तो क्या बड़ा है क्या छोटा है वो सब हमारे दिमाग में है।
एक और कोई रियलिटी में जो बड़ी स्पेस है वो छोटी हो जाती है, जो छोटी स्पेस है वो बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से देखेंगे तो हम छोटे हैं और यूनिवर्स बड़ा है, ये सब भी चेंज हो जाता है। और गहराई में जाएंगे तो अनंतता का कोई एंड नहीं है दोनों दिशाओं में, जो 1000 सीड्स ऑफ जॉय में भी है कि आपके शरीर के बाहर भी अनंतता है पूरे ब्रह्मांडों में, शरीर के अंदर भी अनंतता है। मॉलिक्यूल्स, एटम्स जिनसे आपका शरीर बना है, उनके अंदर भी ब्रह्मांड हो सकते हैं और उनके अंदर भी ब्रह्मांड हो सकते हैं। ये अनंतता का विस्तार होता जाता है दोनों दिशाओं में, अंदर भी बाहर भी। इन्फिनिटी का बहुत ही गहरा मीनिंग है, वो नहीं है जो आप सोचते हैं। इन्फिनिटी, अनंतता दोनों दिशाओं में जाती है, छोटे से छोटा और भी छोटा होता जाता है, उसमें भी ब्रह्मांड है। बड़े से बड़ा और भी बड़ा होता जाता है, उसमें भी ब्रह्मांड है। तो इन का अनुभव कैसे होता है? तो यहाँ पर हम जैसे जैसे ये भौतिक पदार्थ इसकी दुनिया से ऊर्जा की दुनिया में जाएंगे, लाइट बनते जाएंगे, रेनबो बॉडी बनते जाएंगे, तो हमें ब्रह्मांडों का एहसास होने लगेगा। सब लाइट से रिलेटेड है ये। हम जितना लाइट बनते जाएंगे उतना हमें अंदर महसूस होने लगेगा कि कितनी वास्ट एनर्जी अंदर है, ब्रह्मांड अंदर है। तिब्बतन बुद्धिज्म वज्रयाना में कई उदाहरण है रेनबो बॉडी मास्टर्स के। महाअवतार बाबा जी की भी रेनबो बॉडी है, यानी कि बॉडी लाइट की है। और जब ऐसा अनुभव होने लगता है कि हम लाइट बनते जा रहे हैं, तो ऐसा दिखने लगेगा अपने अंदर ब्रह्मांड है। और इसका अनुभव महाअवतार बाबा जी आज सुबह करा रहे थे। एक बार हमारे कर्मों की क्लीनिंग हो गई, उसके बाद हमारा एक्सपेंशन हुआ और पृथ्वी फुटबॉल बन गई। हम बहुत यूनिवर्स के बराबर बन गए और पृथ्वी एक छोटा सा डॉट बन गई। यानी कि हमारे अंदर भी इस तरह के ब्रह्मांड हैं। तो ये एनर्जी का अनुभव है। जैसे जैसे आप एनर्जी बनते जाएंगे, शून्यता आती जाएगी। शून्यता, एकदम गहरी शून्यता, कंप्लीट शून्यता, उसमें सबसे बड़ी इन्फिनिटीज, अनंतता है। इसलिए दिमाग को ड्रॉप करते जाना है, शून्य बनते जाना है। विचारों को, धारणाओं को, इमोशंस को, अहम जो भागता है चीज़ों के पीछे, बड़ा बनने की कोशिश करता है, उसको एकदम पिघला देंगे तो अनंतता को पा जाएंगे। अनंतता आपके अंदर है, दोनों दिशाओं में है। बाहर भी अनंतता, अंदर भी छोटे से छोटे में भी ब्रह्मांड है, उसमें भी अनंतता। इसका अनुभव माइंड से नहीं, एनर्जी से होता है। तो मन को पिघला देंगे शून्यता में, एनर्जी बॉडी बन जाएंगे, लाइट की बॉडी की तरफ जाएंगे, तो आपको अपनी वास्टनेस, आपका जो अनंत रूप है, वो दिखने लगेगा।
तो ये शून्यता जो है, इसके अंदर कई रहस्य हैं, और आज इसका दर्शन करा रहे थे बाबा जी। और यहाँ तक पहुँचने के लिए माइंड का जाना बहुत ज़रूरी है, यानी माइंड में सारे इम्प्रिंट्स होते हैं कर्मों के, ईगो, इमोशंस, सारे जुड़े होते हैं पहले 2 चक्रों से, पहले 3 चक्रों से, मगर 2 में ज़्यादा होते हैं, 2 में इम्प्रिंट्स गहरे होते हैं। इन इम्प्रिंट्स को निकाला जा रहा था, कितने डिवाइन बीइंग्स जुड़े थे, क्लीनिंग हो रही थी, और एक बार ये क्लीनिंग कुछ हो गई, पूरी होने में तो एनलाइटनमेंट हो जाएगा, धीरे धीरे हो रही है। तो एक स्टेज पे आके वो अपने को ये दर्शन कराने ले गए थे कि आप में भी ब्रह्मांड है, आप अनंत हो, यानी कि आप एनर्जी बॉडी में अनंत हो। उसका एक्सपीरियंस आने लगेगा। अगर आप शून्यता में जाते जाएंगे, कर्मों के ऊपर लाइट बन जाएंगे, तो आपको इस अनंतता ब्रह्मांड बनने का अनुभव होगा। ये 1000 सीड्स ऑफ जॉय में भी एक मेडिटेशन नंबर 3 है, ब्लेसिंग द यूनिवर्सेस विद इन। लक्ष्मी जी ने भी यही नॉलेज दी है 2018 से भी पहले, वो ही नॉलेज जहाँ उस मेडिटेशन में हम अपने आप अंदर ब्रह्मांडों को महसूस करते हैं। तो ऐसा रूप अपना जानेंगे तो एक नई रिस्पेक्ट आ जाएगी अपने लिए, जो हमने सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात की थी, कि सांसों से शांत करना है, मन के ऊपर जाना है, एम्प्टीनेस, ब्लिस, शून्यता और परमानंद की एनर्जी। उस एनर्जी में आप लाइट बनते जाते हैं, एनर्जी बॉडी। जितना लाइट बनते जाएंगे उतना आपको अपने अंदर ब्रह्मांड भी दिखेंगे, और उसका एक अनुभव बाबा जी करा रहे थे कि आप पूरा ब्रह्मांड बन गए हैं। और वैसा करने से आप पूरा पिघल जाते हैं, बॉडी डिसॉल्व हो जाती है पूरी। तो ये बहुत ही एनर्जी का जो प्रोसेस है वो चल रहा था सुबह, और कई डिवाइन बीइंग्स मैंने जिनके बारे में बोला सब आए थे कर्मों को हील करने के लिए। पहले 2 चक्रों में काफ़ी काम हुआ। तो ये एक केवल सारांश है कि ऐसा भी होता है कि अपने में ब्रह्मांड हैं, जिसका अनुभव हम जितना लाइट बॉडी में आएंगे उतना करते जाएंगे। ऐसे भी रहस्य हैं, ऐसे भी ज्ञान है, इसका अनुभव आपने आज किया। और सब शुरू होता है सांसों से। सांसों का ज्ञान से सांसों में आ जाएं, और सांसों से आप अपना माइंड के कॉर्ड्स को आप काटने लगते हैं, शून्यता में आने लगते हैं। उस शून्यता में बढ़ने से फिर आप अपने कर्मों को देखते हैं, फिर वापस अंदर जाते हैं, फिर क्लीन करते हैं, फिर शून्यता में बढ़ते हैं। तो इसका लास्ट पॉइंट आज यही कहेंगे। थोड़ा टाइम होने वाला है अपना। एक लास्ट पॉइंट ये है कि ये क्या बोलते हैं इसे,
ये ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन करना सीख गए, कुछ लोग सीख जाते हैं और एक आनंद की दुनिया में पहुंच जाते हैं, विचारों के ऊपर समाधि में, और फिर वहीं पे रहना है। यहीं पे लोग थोड़ी गलती कर जाते हैं, और ये देवियों ने बोला, इतना मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं था, कि अपना जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि मेडिटेशन करके बस आनंद में बैठ जाना। नहीं, उद्देश्य जीवन का है मेडिटेशन करके आनंद में आना और फिर शरीर में वापस जाना, तीनों चक्रों में गहराइयों में और जाना। लोअर जो बॉटम के जो 3 चक्र हैं उनमें गहराइयों में और जाएंगे तो शरीर और लाइट का बन जाएगा। एनलाइटन मास्टर्स कई हैं, मगर सबके शरीर रेनबो बॉडी के नहीं हैं जैसे महाअवतार बाबा जी के हैं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो आनंद में पहुंच गए हैं, वो वापस शरीर में नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ और भी कुछ और सोल साइकिल से, जब आप जानवर थे, पेड़ थे, पृथ्वी थे, रॉक्स थे, उस रियलिटी के भी कुछ इम्प्रेशंस हैं, उनको भी क्लियर करना है। तो एनलाइटनमेंट का भी कोई एंड नहीं है, करते जाएं, बॉडी और लाइट की बनती जाएगी। तो मेन मैसेज ये है कि ध्यान सीख लिया, आनंद में आने लगे, और फिर इमोशनल बॉडी माइंड को देखना बंद कर दिया। केवल सांस लेके ध्यान में आ गए, खुश हो गए, वहाँ बैठे हैं, फिर दिनचर्या शुरू हो गई। ये नहीं करना है। ये जो ग्रोथ हो रही है आपकी, आप आनंद में आना सीख रहे हैं, उस आनंद की रोशनी को लेकर वापस तीनों चक्रों में जाना है। रूट में, सेकंड चक्रा में, थर्ड में। इनमें ज़्यादा कर्म है, सारे कर्म हैं। ये और निकलते जाएंगे तो आपका दिल और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और भी एक्सपेंशन में आप महसूस करेंगे। तो इसलिए बार बार रूट चक्रा में काम होता है, बार बार सेकंड चक्रा में काम होता है, क्योंकि कितने भी आप एनलाइटेंड हो, जब तक आप पूरी रेनबो बॉडी ऑफ लाइट नहीं बने हैं, वापस जाके देखना है और क्या कर्म है और क्या इम्प्रिंट है। तो ऐसे चलता है ये प्रोसेस, जिसमें आप एनर्जी बॉडी बनते जा रहे हैं। So one last point I wanted to share is that there is an impression that the goal of meditation is to quieten the mind, become emptiness bliss, and to stay there. And the goddesses have also said, this is not true. The goal is not to simply escape from what remains in your lower chakras. You can learn to meditate, go beyond thinking, and then become emptiness bliss. Even learn how to get into samadhi and just stay there. No, you can do more than that. You become that emptiness bliss, and then once again you go into the root chakra, into the second chakra, and still something remains which you're not looking at. These are some deep impressions from even previous soul cycles, when you might have been a tree, you might have been an animal, you might have been a stone, all the way going back to. तो ये मैं हिंदी में समझ रहा था ना, तो
तो ये आप नो मैंने समझा दिया हिंदी में. आई वाज जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. तो so this is something you have to do. You have to go deep within and keep coming back again and again. So say there's an enlightened master. His 5 chakras are fully open. We know many not many, but some enlightened masters who are like that, very enlightened. But this knowledge is so deep and so profound from the goddesses in this path with Mahavatar Babaji, who is a rainbow body master, that even these enlightened beings, Lakshmiji also says, can meditate more. Why? Because they've not become a rainbow body of light like Mahavatar Babaji. That means there is some density that still remains. Even though they look very blissful, even they can explore the root chakra, the second chakra, the third chakra, even more, and they'll find something that remains. So you use your enlightenment to go back into karma from not lifetimes, but from soul cycles. Lifetimes of karma you might have resolved in this soul cycle. That's why you're enlightened. But to become this body of light in which you will find universes within, to become that, you can go even deeper. So that means as enlightened as somebody is, they can also meditate, release some karma even more. And Sunita ji said many times that Mahavatar Babaji wants us to become like him. There are very few masters on earth that have attained rainbow body of light like him, Padmasambhava, maybe Jesus, very few who have at that high level of realization of rainbow body light, of light. But this is the future of humanity. As we go into the fifth dimension, we will come to these spiritual states where we are that enlightened. So this is profound wisdom that you don't have to stay in the bliss. You use that bliss to come back and go into the lower chakras and do some more release of karma. And the beautiful thing is that we have a path with Mahavatar Babaji, Mataji, many divine beings doing this process with us in the morning. So karma is being released. All we have to do is surrender, surrender, surrender. So we are doing it ourselves also with our breath, with our love, joy, forgiveness, gratitude practices, and with the help of divine beings. So that is what I would share for today's process, some wisdom connected to it. तो अब हम ख़त्म करते हैं अपना सेशन. थोड़ा सा विजडम शेयर करिए. अपन ने कॉन्टेक्स्ट दिया कि क्या हो रहा था आज, कितना बड़ा प्रोसेस हो रहा है, यूनिवर्स बनाया जा रहा है, हमें एनर्जी बॉडी बनाई जा रही है, और कितने डिवाइन बीइंग्स हेल्प कर रहे हैं. बहुत ग्रैटिट्यूड सबका. महावतार बाबा जी, माता जी, कितने देव देवियाँ, masters, thousands of masters. We should have gratitude for so much that is being given to us in these morning sessions with Mahavatar Babaji, Mataji, all the
all the great divine beings, thousands of masters, the whole universe is with us. It's like we should be filled with gratitude. Come back to your body and thank your body and your breath to open up this beautiful world inside. Universe is inside. Thank your amazing body from crown to the chest to the navel, abdomen, second chakra to thighs, to knees, and to the soles of your feet. Touch your body, thank the body. अपने शरीर को, सांसों को धन्यवाद दीजिए। कितना महान है ये शरीर, इसमें यूनिवर्सेस हैं। केवल सांसों से जुड़ना है। धन्यवाद करिए क्राउन से, हार्ट से, नेवल, एब्डोमेन छूते जाइए अपने शरीर को अपने हाथों से। सेकंड चक्रा, थाइस, नीज, तलवों तक। फिर वापस ले आइए पैरों से लोअर बैक, चेस्ट, कानों पे और क्राउन पे, and back, touching back the legs and the lower back and the chest and your ears and back on your crown. And now you can put your hands on your eyes, on your face. अपने हाथों को अपने चेहरे पर ले जाइए and 5, 4, 3, 2, 1, 0. You can open your eyes. आंखें खोल सकते हैं. Okay, masters, thank you for the journey. सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए. फिर सुबह मिलेंगे मेडिटेशन में. Okay, we'll close the meeting now. I am the host. Thank you, everyone. Thank you and see you tomorrow.